Good morning, everyone. I hope you all are there. So let's proceed with the topic. The discussion on public administration. And now, with regard to this topic, as I told you yesterday, that we are discussing on some theories of administration. We have taken the regard of very first theory, and the name of the theory was actually scientific management theory. So yesterday I've dealt with the whole introductory part of scientific management theory, and this particular theory able to inculcate some scientific methods and practices in the managerial activities. Agree? And this particular theory also focus on the management of workers. Actually, the main theme of this theory, the main focus area, the locus and focus of this particular theory was to focus on the management of workers. I mean, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स को या ऐसी प्रोसेसेस को हम लोग डेवलप करें जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी आए किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में या एडमिनिस्ट्रेशन में. So in this regard, the whole theory was propounded, and I hope you understand the very basis of the theory of scientific management. Agree? So as I told you before, the theory of scientific management is based on some principles and some outcomes. And again, the question with regard to the principles and the outcomes would be asked, or could be asked basically by the propounders of the theory. With regard to the principles of administration, let me tell you one more thing. These principles are actually the outcomes of scientific management. और जो मैं बता रहा हूँ आपको, the question with regard to these principles could be asked any time by the examiner, by the commission. So let's come to the principles of scientific management and let's deal with these inherent ingredients of scientific management. So as I told you yesterday, that I'm taking the regard of principle, there are a number of principles of scientific management. There are total 5 principles. And I'm discussing with the very first principle or outcome of scientific management called as the development of a true science of work. The development of a true science of work. देखते हैं ये principle क्या है और इसमें फेडरिक टेलर क्या कहना चाहते थे या इनका क्या मानना था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को लेकर या इंडस्ट्रियल आउटकम को लेकर. चलिए बात करते हैं. सी सो now as I told you before, according to this principle, I mean the foremost principle called as the development of a true science of work. Now science means a type of study or a type of process which is based on some systematic and of course supporting evidences. And the evidences would be rational, cognizable, and of course assimilating or acceptable. That study is called as a study of science. So we want to develop, of course, administration as a science, or we can say the managerial practices as a science. Now, as I told you yesterday that of course the whole theory was developed, propounded in industrial unit, I mean private sector. And the evolution of this particular theory has taken place in the wake of industrialization. जो मैंने कल आपको बताया था कि 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, अमेरिका में, और कई नई ऑर्गेनाइजेशंस बनी. ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है कई फैक्ट्रीज, कंपनीज बनी, कई इंडस्ट्रीज बनी. एंड ये जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने कई वर्कर्स को रिक्रूट किया. और फिर वंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट हैड टेकन प्लेस, देन वी हैव फेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स like how to manage workers, problems like how we can increase the productivity and efficiency of the workers, problems like in which particular manner we can develop some methods which can bring more effectiveness in the working. मतलब कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कौन सा मेथड, कौन सा सबसे सटीक मेथड या सही मेथड होना चाहिए जिससे हम लोग प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें. जो नए वर्कर्स आए हैं, रिक्रूट होके आए हैं, दे आर नॉट हैविंग द एक्सपोजर, द एक्सपीरियंस टू वर्क इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट. Because for the very first time, so many manufacturing units of textile, iron and steel, of plastic, etc. have evolved in Europe and America. तो पहली बार ऐसी नई कारखाने बने थे, नई यूनिट्स बनी थी और पुरजोर तरीके से बनी थी. लेकिन इनमें वर्कर्स को मैनेज करना, उन्हें मोटिवेट रखना, उन्हें रेम्यूनरेशन देना, उन्हें पे देना, सैलरी देना, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क साबित हुआ, ठीक है, in front of every industrial owner or in front of every manager. So in this particular thought, in this particular principle or outcome, Mr. Frederick Taylor has proposed that we have to develop the best way to perform any particular work.
लाइक इफ देयर इज एनी इंडस्ट्रियल यूनिट, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि एक बोतल बना रही है, मान लो ये बोतल बना रही है, तो बोतल बनाने के लिए सबसे सटीक, सबसे एप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक क्या होनी चाहिए? वी हैव टू डिस्कवर, वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मेथड. Now, in the production of this particular bottle, 1 unit of bottle, if some workers are involved, like 2 or 3 workers are involved, then which particular technique or which particular process would be adopted by the worker to bring more and more production of the bottle? समझ रहे हो? So we have to develop the best way to do any particular work. And for this particular purpose, a scientific research, a scientific illustration would be done in any particular industrial unit, and then only we can come to the conclusion that we are having a particular scientific, you can say, method to do any particular work. So as I told you before, this theory focus on the application of scientific method and scientific practices in managerial processes. Or in simple language, this particular theory is actually relying on or giving its attention to, actually concentration to, scientific methods in the managerial processes and the managerial practices. And the main focus again of the theory is to develop the best way to do any particular type of work. Now, once we have developed the best way to do any particular work in an industrial unit, that best way, called a scientific method, would be adopted, would be applied, of course, in other industrial units also. जैसे एक बार अगर हमने ये डिस्कवरी कर ली, मैं एग्जांपल देता हूं कि बोतल बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, तो अब इस टेक्निक को दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट भी अपना सकती है. पेन बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, इसमें कितने वर्कर्स को लगना चाहिए, इस पेन बनाने में कितना समय लगना चाहिए, क्या इसके मेथड को हम और ठीक कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स को और ठीक कर सकते हैं, और हम लोग वर्कर्स को मैनेज कैसे करें, मतलब वर्कर्स को मोटिवेट कैसे रखें, वर्कर्स को कितना पैसा देना चाहिए, कितने वर्कर की जरूरत होगी एक पेन को बनाने के लिए या नंबर ऑफ पेन्स को बनाने के लिए. सो इन दिस वे वी हैव डेवलप्ड ऑफ कोर्स सम मेथड्स, and these methods would be applied in all the other industrial units of the world. Let me tell you one more time, the evolution of this particular theory has not taken place in public administration or in governmental administration. नहीं, गवर्नमेंटल सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में ये थ्योरी इवॉल्व नहीं हुई थी, ये थ्योरी इवॉल्व हुई थी प्राइवेट सेटअप में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स. एग्री? एंड देन ऑफ कोर्स we came to know that we have to develop, of course, a true science. What I've written over here, just see here, that management is a true science as it rests on fixed laws and principles. I mean, once we have developed a technique or method to do a particular work, that method becomes actually a true science. And now that particular true science is based on some laws. I mean, laws का मतलब होता है ये universal application of any particular method. We can apply that particular method in other industrial units also. So this was a very first principle of Frederick Taylor. Let me summarize the whole principle. इसमें 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है. पहली, we have to develop, we have to discover the best way to do any particular work in an industrial unit. We have to manage workers, manage workers in a much more appropriate manner. We have to apply scientific methods for managerial practices and, of course, managerial processes. Management is an institution that, of course, plan, command, direct, guide the workers. So we have to develop the most scientific method by which the management can guide, direct, command, and control the workers. Agree? So this was a very first principle of scientific management theory, or the outcome of scientific management theory. Agree? Now with this principle there was one more principle, and the second principle was that all the workers which are working in an industrial unit should be scientifically selected. All the workers should be scientifically selected and progressively developed. Like, I want to give an example over here. मान लीजिए I am having a startup. I am starting a startup and I want to manufacture a particular thing. Manufacture, of course, you can say this remote or this mobile. ठीक है? So now when I've started startup, quite obvious, I need some workers, some technicians, some professionals, some managers also, etc. So for this particular purpose, what I have to do, I have to scientifically recruit them, scientifically appoint and select them. अगर मैं किसी वर्कर को ले रहा हूं तो उससे पहले मुझे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, पर्सोनिफाइड करना पड़ेगा.
ताकि जो वर्कर रिक्रूट होके आए, चुन के आए, सेलेक्ट होके आए, वो अपनी फील्ड में प्रोफेशनल हो, एक्सपर्टाइज रखता हो, स्किलफुल हो। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर Frederick Taylor, if any particular industrial unit focus is selecting, recruiting any worker, देखो ये बात बहुत पहले की हो रही है, of 19th century, 20th century. At that time, we are not having skilled workers. We are not having, of course, technical professionals. The workers are doing on the job training, मतलब काम करते करते वो सीखते थे। हालांकि हम भी अभी भी वही कर रहे हैं, काम करते करते ही सीखते हैं, लेकिन इनका बहुत पहले ये मानना था, in the early part of 20th century, कि we have to develop method by which the workers should be scientifically selected and progressively developed. I mean, it is required for the manager to understand the limitations and the scope of development of a worker. एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो ये समझ सके कि उसका जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, लेबर हो सकता है, सिंपल मैनुअल वर्कर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। तो बहुत जरूरी होता है एक मैनेजर के लिए कि वो ये समझे कि उसका जो वर्कर है या एम्प्लॉय है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता, उसमें स्कोप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्या वो अपने स्किल्स को और एनहेंस कर सकता है। अगर कर सकता है तो मैनेजर को उसके स्किल को एनहेंस करने के लिए ऑफ कोर्स सारे कदम उठाने चाहिए, सारे स्टेप्स लेने चाहिए। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, इनिशियली वी हैव टू साइंटिफिकली रिक्रूट द वर्कर्स, and after scientifically recruit the workers, we have to develop them. I mean, we have to develop some technical expertise in them. We have to, of course, bring some skills in them, and we have to make workers much more competent. तो हमने शुरू में देखो दो काम करने हैं। पहला, we have to develop a true science to do any particular work. Now, true science means the best way, the best method to do any particular work in an industry, in a factory, in a company. And for this particular purpose, we have to apply some scientific method in managerial practices. Because according to Taylor, listen carefully, management is a science which can be applied, of course, in different settings. एक बार आपने कुछ साइंस के फॉर्म में मेथड्स को डेवलप कर ली, तो इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को, इन प्रोसेसेस को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला आउटकम था। दूसरा आउटकम ये है कि वी हैव टू साइंटिफिकली सेलेक्ट वर्कर्स एंड वी हैव टू प्रोग्रेसिवली डेवलप देम। It is required for the manager to, of course, understand the limitations and the scope of development of a worker. And then we have to provide training to them. Once we are providing training to them in a particular area, then of course the workers could become much more competent and skillful. तब जाके वर्कर, उसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, वो स्किलफुल होगा या कॉम्पिटेंट होगा। This was the second outcome of scientific management theory. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही है वी हैव टू साइंटिफिकली मैनेज वर्कर्स सो दैट दे कैन ब्रिंग मोर प्रोडक्शन, मोर इफेक्टिवनेस, मोर इकोनॉमी, मोर एफिशिएंसी इन वर्क। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द सेकंड आउटकम ऑफ यू कैन से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नाउ लिसन, इन द अर्ली टू आउटकम्स और प्रिंसिपल्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेवलप अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, मतलब सबसे अच्छा तरीका कोई वर्क को या काम करने के लिए। And now we have scientifically selected and trained workers, and we have made workers competent, and of course we have developed a true method, science to do any particular work. दोनों काम हम लोगों ने कर लिए। Now in the third principle or in the third outcome, what we have to do? Listen carefully. ठीक है, we have to bring together the science of the work and scientifically selected workers. मतलब एक तरफ तो हमें ये पता चल गया कि भाई सबसे अच्छा मेथड, तरीका, टेक्निक क्या है किसी काम को करने के लिए, और दूसरा हम लोगों ने अच्छे वर्कर्स को अपॉइंट भी कर लिया, सेलेक्ट भी कर लिया। अब इन दोनों का कोएगुलेशन करना है, इनको दोनों को साथ लेके आना है, सो दैट द बेस्ट एफिशिएंट वर्कर शुड अडॉप्ट द साइंटिफिक मेथड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर वर्क एंड टू ब्रिंग मच मोर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन और इन द मैनेजमेंट और इन द इंडस्ट्री। देखो क्या करना है, ठीक है। When we have developed the best method, the best way to do any particular work, and when we have recruited and selected scientific, competent workers, skillful workers, then what we have to do? Be very sure. Now we have to basically deploy or post or give the, you can say basically, engagement to worker to perform that particular scientific work. I mean, we have to bring together the scientific work, I mean the true science of the administration with the worker, so that the efficient worker
efficient worker by adopting the scientific methods and techniques would bring or could bring much more production and effectiveness in the organization. So this is our third outcome or third principle. Now Mr. Frederick Taylor has used a term, उन्होंने एक term use किया, उसको उन्होंने कहा soldering. देखो यहाँ पे, he has used a term called as what? The soldering. ठीक है? Soldering. Now soldering literally means delay in work. It means delay in work. तो ये सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए इफ आई एम ए वर्कर, तो व्हाई आई विल डिले द वर्क, मैं काम में देरी क्यों करता हूं? अगर मुझे काम दिया गया है, टास्क दिया गया है कि मुझे एक दिन में 10 बोतल बनानी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो यह भी हो सकता है कि मैं डेलिब्रेटली काम को डिले करूं, और यह भी हो सकता है कि मेरे में इतनी कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि मैं एक दिन में 10 बोतल बना सकूं। तो deliberated, basically what I can do, I can delay the work. That delay the work type of you can basically activity is called as soldering. So one could be of course a deliberate type of soldering कि जानबूझकर वर्कर कम काम करते हैं, कौन काम करे, लेजी, आराम से काम करना है, और दूसरा workers are not competent enough of course to do the same type of work. Like if I'm a worker, ठीक है, मैं एक मजदूर हूं एक फैक्ट्री में, और मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मुझे टास्क दिया गया है कि मुझे एक दिन में 10 बोतल बनानी है, लेकिन ना मेरे पास इतनी ट्रेनिंग है, ना एक्सपर्टाइज है, ना स्किल है कि मैं 10 बोतल बना सकूं। हो सकता है मैं केवल 6 या 7 बोतल बना सकता हूं। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रेडरिक टेलर वी हैव टू रिड्यूस दिस प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। ठीक है, वन टाइप ऑफ सोल्डरिंग कुड बी डेलिब्रेटेड सोल्डरिंग, वर्कर जानबूझ के काम नहीं करना चाहता है या काम में देरी करता है, जो आप देखते भी होंगे अपने घर में, अगर कुछ काम करवा रहे हैं, अगर फर्नीचर का काम करवा रहे हैं, वर्कर बोलते हैं 5 दिन में कर देंगे, कारपेंटर, लेकिन वो कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो ये चीज होती है क्या? लेजीनेस, मतलब जानबूझकर आप काम में डिले कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि द पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू ए वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। So according to Mr. Frederick Taylor, when we have developed the best method to do any particular work, and when we have selected the most competent workers and trained them, then we can reduce soldering from the work, from the management, from the production. तो हमें सोल्डरिंग को कम करना है, मतलब जो काम में देरी होती है उसे कम करना है, और वो कम करने का 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है? वी हैव टू डेवलप द बेस्ट मेथड, द बेस्ट वे, द ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकंड वी हैव टू साइंटिफिकली सेलेक्ट वर्कर, and then we have to bring together the scientifically select worker with a proper method and the best way to do the work, and then we can reduce soldering. Soldering here means delay in work. Agree? So this was the third important principle of or outcome of scientific management theory. I hope मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब फोर्थ आउटकम देखो, फोर्थ प्रिंसिपल देखो। द फोर्थ प्रिंसिपल इज समवॉट लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग, सुनिए। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सी, आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट when an organization is created, when a setup is created, it is always created in hierarchical model. At the top level we are having some superiors, okay? To the assist superiors we are having some employees called as subordinate. To assist subordinate again we are having some employees called as sub-subordinates, and so on and so forth. So in this way we are having a gradation of power, gradation of authority, gradation of responsibility. Agree? So according to Mr. Frederick Taylor, some of the persons would act as managers. I mean managers means top level superior rank authoritative officials. जो ऊपर वाले रैंक पर बैठे हैं वो मैनेजर हैं, और जो नीचे वाले रैंक पर हैं वो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं। एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, मैनुअल वर्कर हो सकता है। So what we have to do, we have to divide the work and responsibility to both management and workers. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि that only the management is having the responsibility to do a particular work. ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि only the workers would have the responsibility to perform their function. The work and the responsibility
should be distributed between the management and the worker. मैनेजमेंट ये गाइड कर दे, डायरेक्ट कर दे कि आपको काम ऐसे करना है, आपको काम इतने समय में करना है। अब ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतने समय में काम वो करके दे मैनेजर को, ठीक है। सो फ्रेडरिक टेलर हैज डिमांडेड फॉर ए टाइप ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, mental revolution on the part of both workers and management, superior and subordinate. इन्होंने ये कहा कि एक तरह का मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो मेंटल थॉट प्रोसेस होती है, जैसे एक मैनेजर होता है, उसका काम क्या है, डांटना, डपटना, आदेश देना, कमांड करना, चिल्लाना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, प्यूनिटिव एक्शन लेना, और वर्कर का काम क्या होता है, मैनेजर की बातें को सुनना, कभी नहीं सुनना। तो मैनेजर को और वर्कर को दोनों ये समझना चाहिए, सुनो, कि इफ वी आर एनहेंसिंग प्रोडक्शन, ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस, generating resources, I mean capital, money, then it would be benefited for both workers and management. So Frederick Taylor advocated for mental revolution. I mean, we have to change the mental thought process of management also and worker also. दोनों ये समझे कि आपस में लड़ाई करने का, कॉन्ट्रडिक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। We have to bring much more harmony, not discord. We have to bring much coordination, cohesiveness, not aberration or not hindrances. No. हमें आपस में सौहार्द, हार्मनी से काम करना है, क्योंकि दोनों का गोल एक ही है। दोनों का गोल क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, पैसा कमाना। और जब पैसा आएगा, कैपिटल आएगा इंडस्ट्री के पास, तो वो सब में बटेगा, वर्कर्स में भी बटेगा, एप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट को भी मिलेगा, ठीक है। So, if the progress or the development of a company or industry takes place, the benefits would be given, of course, equally or not equally, appropriately to management and workers. And the interest of management and worker is to bring much more coordination, harmony, and much more cohesiveness between each other. दोनों ये सोचें कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्वर्स नहीं है। दोनों ये सोचें कि लड़ने झगड़ने से, डांटने डपटने से, स्ट्राइक करने से, हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। अगर वर्कर ये सोचता है कि मेरी डिमांड नहीं मांगी जा रही तो मैं हड़ताल कर दूं, मैनेजमेंट ये सोचता है कि हड़ताल करेगा, इस पर कुछ प्यूनिटिव एक्शन ले दो कि तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें हटा देंगे, ठीक है। तो ये सोच थोड़ी गलत है। फ्रेडरिक टेलर का मानना था, इनका ये मानना था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन ब्रिंग what much more production and efficiency in our organization. So Mr. Frederick Taylor, the propounder of scientific management theory, has advocated for mental revolution on the part of workers and management both. And this was the fourth outcome of scientific management theory, what you have to write in the examination. ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या लिखना है? व्हेन आई टॉक अबाउट आउटकम्स, दीज आर द 4 आउटकम्स। आई होप क्लियर। द वेरी फर्स्ट आउटकम, सुन लो जरा, वी हैव टू डेवलप द ट्रू साइंस, अ पर्टिकुलर मैथड, द बेस्ट वे टू डू एनी पर्टिकुलर वर्क। सेकंड, वी हैव टू साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेन वर्कर्स so that they can become competent and skillful. Third, we have to bring together the best way to do any particular work with scientific worker, I mean with competent worker, and then only we can enhance productivity and effectiveness. And fourth outcome, be very sure, is that there should be a mental revolution on the part of worker and management, and they should work in harmony, not in contradiction. Agree? Work and responsibility should be distributed between management and workers appropriately, so that the role of management and worker should be very much clear. सबको ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या काम करना है, and then only we can enhance productivity. And just see the fifth important principle. ठीक है, मेरे ख्याल से चारों प्रिंसिपल क्लियर हुए। And the fifth important principle is called as functional foremanship. अब ये functional foremanship क्या है? ठीक है, हालांकि ये बहुत ही यूटोपियन बात इन्होंने कर दी, पर फिर भी समझिएगा कि व्हाट दिस फंक्शनल फोरमैनशिप इज ऑल अबाउट। नाउ फंक्शनल फोरमैनशिप मींस इफ देयर इज एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट एम्प्लॉय शुड टेक डायरेक्शन फ्रॉम 8 persons. 4 persons could be technician, 4 persons could be non-technician administrators.
मतलब 8 लोगों से ये कमांड ले, 8 लोगों से ये डायरेक्शन ले, एंड देन ओनली हिज वर्क और हर वर्क कुड बिकम टेक्निकल और साइंटिफिक। जैसे मान लीजिए कि इफ ए वर्कर, आई एम ए वर्कर, इफ आई एम डूइंग ए क्लरिकल वर्क, क्लरिकल वर्क मीन्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वगैरह, अकाउंटिंग में कर रहा हूं, बही खाता बना रहा हूं, then I should take the direction from a clerk, clerical level officer. If I am doing any technical work in the sense, of course, that how I have to, you can basically develop a particular technique to create this particular object called as bottle. So if I am doing any technical work, मुझे अगर technique सीखनी है, then I have to take the direction from the technician who is working in the organization. Similarly, if I am doing the marketing work, so again I have to take the direction from those persons which are having expertise in marketing. Agree? So in this way, if I am doing the management work, I mean I am managing, directing my subordinate, then I will take the direction, of course, from the manager. So in this way, an employee, a worker who is working in a company or industry should take direction from 8 specialized persons. And when he or she is taking direction from 8 specialized person, then only the work of that particular worker would become scientific. And this concept is called as scientific management. I mean, we have to scientifically manage workers to bring more production and productivity. So in examination, you have to write these 5 outcomes or these 5 principles of the theory. I hope now you are in a position to understand the theory of scientific management. जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 3-4 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो सीधे ये पूछ सकते हैं, what are the basic components or features of scientific management theory? What are the fundamental outcomes of scientific management theory which has bring production and productivity? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, क्वेश्चन को अब इसलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक से पहली बार कमीशन क्वेश्चन पूछेगा. आपको पता है कि दिस टॉपिक हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय द कमीशन. सो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम that the paper would be conducted in the month of April if the examination would be conducted. तो मैं थोड़ा सा अपना विजडम लगा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. और they can ask about the criticism of the concerned theory, or they can ask about the relevance of the concerned theory, or they can ask about a topic called as critical evaluation of the concerned theory. So when we are doing the critical evaluation of the theory, automatically we are doing criticism and we are highlighting the positive aspects of the theory. कैसा भी मैं बताता हूं आपको. तो एक टॉपिक हमें में पढ़ना है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, बट आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर. ठीक है, तो इसमें फटाफट कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिमार्केट किए हैं, वो आप लोग लिखिएगा और उसी को एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. मेरा काम है कंसेप्ट आपको क्लियर कर देना और थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में, जो कि लैंग्वेज यूज की जाती है मैनेजमेंट में, उसमें आपको लेक्चर डिलीवर कर देना. ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, हर एक टॉपिक की, इट कुड बी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एक्सेट्रा, इट इज हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज, ओन नॉमेनक्लेचर, ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन. एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अगेन हैव इट्स ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन. एग्री? चलिए तो लिखिएगा, द प्रिंसिपल्स और आउटकम्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. The principles or outcomes of scientific management theory. Agree? Scientific management theory. First one, development of a true science of work. Development of a true science of work. Development of a true science of work. Of a true science of work. True science of work. ठीक है, इसमें लिखोगे true science of work. Continue. Frederick Taylor has advocated for the application of
advocated for the application of scientific methods to managerial practices, and production, Continue. The focus is to develop the best way. The focus is to develop the best way to do any work. That is development of a science for each element. Development of a science for each element of a person's work. I hope it's clear. Each element of a person's work. Continue. According to Taylor, management is a true science. Based on some fixed laws and principles. And these principles could be applied in any organizational setting. Agree? Organizational setting. So I hope so the very first principle is clear. Second, scientific selection and progressive development of workmen. Workmen means workers. Scientific selection and progressive development of workers. Continue. According to Frederick Taylor, or simply Taylor, it is required for the management to develop those processes by which a worker should be scientifically selected and systematically trained. Agree? Continue. It is also required for the management to identify the limitation and possibilities of development. Agree? Possibilities of development. Okay. So I hope so it's clear. So in which particular manner we have to do the functioning.
Now, third important principle. Third principle, bringing together science of work, bringing together science of work, bringing together science of work, science of work, and scientifically selected workers. Bringing together science of work and scientifically selected workers. And scientifically selected workers. Scientifically selected workers. Scientifically selected workers. Okay. Continue. There should be a proper cohesiveness. There should be a proper cohesiveness and integration between. There should be a proper cohesiveness and integration between. And integration between the method to do any particular work, the method to do any particular work, the method to do any particular work, and workers selected on scientific basis. And workers selected on scientific basis. Workers selected on scientific basis. Scientific basis. Continue. According to Taylor, the fundamental way of increasing efficiency, according to Taylor, the fundamental way of increasing efficiency, fundamental way of increasing efficiency lies in the reduction of soldering, lies in the reduction of soldering, right in bracket, delay in work, soldering, S-O-L-D-E-R-I-N-G, soldering in bracket, delay in work, soldering through scientific techniques, soldering through scientific techniques, through scientific techniques. It means the scientifically selected workers, should adopt the science of work. Scientifically selected workers should adopt the method, science of work, should adopt the science of work to reduce the process of soldering. To reduce the process of soldering. To reduce the process of soldering. Agree? Reduce the process of soldering. So it was a third outcome or principle of scientific management. Just see the fourth one. Fourth, division of work and responsibility between. Title is, यही लिखना है सीधा जाके, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में. Division of work and responsibility between. Division of work and responsibility between. Work and responsibility between worker and management. Worker and management. Work and responsibility between worker and management. Worker and management. ठीक है, इसमें लिखोगे. Continue. It is required for the management to distribute. It is required for the management to distribute. Required for the management to distribute. To distribute work and responsibility between. Work and responsibility between each level of employee. Work and responsibility between each level of employee. Work and responsibility between each level of employee. Each level of employee. A worker is as responsible for. A worker is as responsible for any particular work like. A worker is as responsible for any particular work
any particular work as the persons holding managerial positions, as the persons holding managerial position, persons holding managerial positions. Agree? Continue. Frederick Taylor also advocated for mental revolution, on the part of both workers and management. Elimination of conflict between worker and management. Worker and management should be attained because the mutual interest of both workers and management is not contradictory, and both can prosper. I mean, both can earn money, prosperous. Both can prosper only through cooperation. Both can prosper, I mean, generate money, capital, only through cooperation. Both can prosper only through cooperation. I hope it's clear. So it is again the fourth important principle of scientific management. I hope the concepts are clear. And then now we are coming to the last principle. And the last principle is outcome is functional foremanship. Functional foremanship. Okay? Functional foremanship. I told you what this functional foremanship is all about. It brings specialization in the work and the workers. Continue. According to this principle, a worker should be supervised. And guided by a worker should be supervised and guided by 8 functional foremen. Should be guided by 8 functional foremen. 8 functional foremen, that is 8 specialized supervisors. Functional foremen, that is 8 specialized supervisors. 8 specialized supervisors. 8 specialized supervisors. 8 specialized supervisors. By taking the direction and command from these supervisors, direction from these supervisors, the objective of specialization, could be attained or could be achieved. The objective of specialization could be attained. So I hope so the concepts are very much clear with regard to the principles of scientific management. ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ा about scientific management, I mean what the scientific management is all about.
I mean the basic theme and the basic concept of scientific management. Then we have taken the regard of all the important outcomes and principles of scientific management. And the last important dimension that I want to cover, or I will cover in the class, is a critical evaluation of this concept or theory called as scientific management. ठीक है? अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि critical evaluation होता क्या है, then we'll go to focus on the critical evaluation part, because again the question could be asked with regard to the same aspect of critical evaluation. देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इससे पहले अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को लेकर कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन कई क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, कई क्वेश्चन दूसरे कमीशंस के बोर्ड्स ने पूछे हैं और बॉडीज ने पूछे हैं। तो उसके बेस पर ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ एन इन्फ्रेंस दैट इन विच पर्टिकुलर मैनर द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड बाय एमपीपीएससी। और मेरा ये मानना है कि अगर हम एक एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन, then easily we can highlight the limitations of the theory, and with limitations we can highlight the positive aspect of the concerned hypothesis. So both the angles we are going to cover in a section called as critical evaluation. अब आप समझिए critical evaluation किया कैसे जाता है, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करना हो तो मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा, और वो है दिस थ्योरी इज बेसिकली ए मैकेनिस्टिक थ्योरी। Mechanistic theory. Now, mechanistic theory in the sense it treat of course humans as a machine. It means if we are developing some scientific method, then only we can achieve the target. Then we can of course bring productivity or effectiveness. If we are adopting some techniques which are scientifically proven, then only, only by that scientific method and technique, we can bring more cohesiveness, production, and effectiveness in the organization. मतलब केवल कुछ टेक्निक्स का यूज करके, मेथड का यूज करके, जो कि साइंटिफिकली टेस्टेड हैं, प्रूवन हैं, जो कि एप्रोप्रिएट हैं, उनका यूज करके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज मैकेनिस्टिक एंगल। मतलब दे आर ट्रीटिंग ह्यूमंस एज मशीन। द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक्चुअली ट्रीट ह्यूमंस एज मशीन। कि आपने साइंटिफिकली ट्रेन कर दिया, आपने साइंटिफिकली उसको एक मेथड बता दिया, और वो काम करता रहा, और काम जब वो करता रहा तो उससे प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन दिस पर्टिकुलर थ्योरी हैज नॉट फोकस्ड ऑन, लिसन केयरफुली, दिस पर्टिकुलर थ्योरी हैज नॉट फोकस्ड ऑन ह्यूमन एंगल। आई मीन ह्यूमन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द लीडरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मोटिवेशन फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। ये मैं वही एग्जांपल देता हूं आपको कि आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप लोगों के पास कोचिंग भी है, आप लोगों के पास टीचर्स भी हैं गाइड करने के लिए, आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको पता है ये बुक पढ़ने से या लक्ष्मीकांत पढ़ने से मेरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, आपको पता है कुछ बुक पढ़ने से मेरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, एमपी स्पेसिफिक कवर हो जाएगा, शायद क्वेश्चन भी आ जाए उससे, लेकिन फिर भी एवरी डे, इफ इनफैक्ट नॉट एवरी डे, एवरी वीक रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। And from where you are getting the motivation? By seeing some videos from selected persons, by talking to teachers, friends, etc., sometimes family members. So every time the humans requires motivation. और ये जो mental state होता है, mental health होती है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है effectiveness के लिए। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है में उसमें कई लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हमें यह देखना भी पड़ेगा कि व्हाट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंसर्न एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है। इतने सारे एम्प्लॉय हैं, उनको एक सुपरवाइजर जो होगा वो डायरेक्ट कर रहा होगा। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द सुपरवाइजर, ऑफ कोर्स विद दैट ऑफ द एम्प्लॉय, वेदर द सुपरवाइजर इज हैविंग द लीडरशिप स्किल्स और नॉट। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है। If a person is having, I mean a superior is having the leadership skill, then in adverse condition also he or she can motivate the worker to bring more production. But if the person is not having the leadership skill, अगर उसके पास वो स्किल नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके वर्कर्स से, वर्कर्स की बात सुन सके, उनकी समस्याओं को समझ सके, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट अगेन, in spite of all the scientific techniques, much more production, much more efficiency could not be attained. आप कितनी अच्छी साइंटिफिक टेक्निक्स बना लें, लेकिन अगर प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं है, लीडरशिप स्किल एक सुपरवाइजर में नहीं है, तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता किसी कंपनी का।
ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी हैज नेग्लेक्टेड द ह्यूमन पार्ट, द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन डिमांड्स, ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन एस्पिरेशंस, interpersonal relationship within the organization, every aspect has been neglected by this particular theory. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि द वर्कर्स और अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एनवायरमेंट, इन एन यू कैन से बेसिकली व्हाट सेटअप, इज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स. जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है आपको पैसा मिल रहा है, ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, लेकिन हमेशा आप केवल पैसे से मोटिवेट नहीं होगे. कुछ लोग हो भी सकते हैं कि पैसा मिल रहा है तो भी क्या हुआ, चलो किसी की गाली सुनना है, डांट सुनना है तो सुन लिया, पर पैसा तो अच्छा मिल रहा है. लेकिन कुछ लोग जिनमें थोड़ी एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग होती है, थोड़ा ईगो वाला इशू होता है, थोड़ा सम्मान वो चाहते हैं, रिस्पेक्ट वो चाहते हैं, ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं इन स्पाइट ऑफ कोर्स पैसा ठीक ठाक मिल रहा है. तो कभी कभी केवल मोटिवेशन का फैक्टर मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता. देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो टू डू ए पर्टिकुलर वर्क. अदर एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशंस लाइक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, एंजॉइंग द वर्क. अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपी स्पेसिफिक, एथिक्स, कई टॉपिक पढ़ते हो आप, लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जिससे आप बेटर कनेक्ट कर पाते हो. यू आर बेसिकली एंजॉइंग व्हेन यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और दैट पर्टिकुलर बुक और दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो एक अलग ही मोटिवेशन लगता है कि ज्यादा समय में इसी को पढ़ूं क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ने में. अच्छा, मजा कई कारण से आ सकता है. मजा एक कारण से यह आ सकता है कि हो सकता है जो बुक में लिखा हो या नोट्स में लिखा हो आपको समझ में आ गया हो. समझ में आ गया हो तो मजा आ रहा है. यह भी हो सकता है जिस टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो अच्छे से पढ़ाया हो तो समझ में आ गया तो मजा आ रहा है. और यह भी हो सकता है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो माइंड है, उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा एक्टिव हो. कभी कभी हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई एक रैंडम सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं और हमारा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो आवर न्यूरॉन्स आर वेरी मच एक्टिव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बी वेरी श्योर. So my concept over here is that how we can criticize a theory. We can criticize a theory based on its mechanistic factor, mechanistic orientation. That the theory has not focused on socio-psychological human behavior. Different types of motivation, different type of leadership skills पर इसका focus नहीं था. So it is nothing but the criticism of the theory. It is nothing but the criticism of the theory. ठीक है, तो ये तो criticism हो गया. लेकिन यदि हम क्रिटिसिज्म को इवैल्यूएट करते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने के बाद मैं सिंपल लैंग्वेज बता दूं, हम ये बताते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म था वो सही था या गलत था. इसे कहा जाता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन. So when we are evaluating or analyzing the criticism and then highlighting that criticism is rational, optimum, required or not, then the whole connotation is called as critical evaluation. मतलब हमें क्रिटिसिज्म हमें पता चल गया, इट्स अ मैकेनिस्टिक थ्योरी. अब हमें इसे इवैल्यूएट करना है कि ये क्रिटिसिज्म किस लेवल तक सही है. ठीक है, तो देखो हम लोग इवैल्यूएट कैसे, उसे कहते, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, उसे कहते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन. तो हम लोग इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, yes, of course, the theory neglect the human dimension, human behavior of organization, but the evolution of the theory had taken place in the wake of industrial revolution. And at that time, the main focus of, listen carefully, the main focus of every industry, every unit, every company in 19th, 20th century, earlier part of 20th century, is to bring more and more production. So at that time, the main focus of the whole society, पूरी society का focus ये था, to bring more and more production because we have got an opportunity of industrial revolution. ठीक है, and not even a single person academician has focused on human variables. देखो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि a successor theory is a reformatory version of predecessor theory. जो एक नया कंसेप्ट आता है वो पुराने कंसेप्ट का सुधरा हुआ रूप होता है, लेकिन जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो पायनियर होता है, उसके बाद स्टडी शुरू होती है. तो दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ टेलरिज्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज अ पायनियर थ्योरी of administration and management. Pioneer, सबसे पहले theory आई है. So we have to give, of course,
you can say basically appreciation to Frederick Taylor, that Frederick Taylor has highlighted those methods which can bring production and productivity. So just see, although we can say that this particular theory has not focused on human factor, human behavior, psychological factors, etc. Agree? But at that time, in that society and political setup, the main focus of every stakeholder, it could be a worker, भी ये नहीं सोचते थे कि human factor पर ध्यान दें. It could be a manager, it could be politicians, it could be administrator. The main focus of every stakeholder was to bring more and more production. And at that time, the workers wants to work in any condition, any work condition. Because we are talking about 19th and 20th century. So although we can draw a limitation, we can identify the limitation, लेकिन ये limitations तब आई ना जब theory आ गई. उस समय उनको जो ठीक लगा, जो concept ठीक लगे, वो उन्हें propound करे, वो उन्होंने propose करे. So yeah, we can criticize it, but of course we can evaluate it that at that time, the main focus of the whole society, administration, management, worker का भी, to bring more and more production and prosperity. And every stakeholder of the society, including the worker, has neglected, you can say, the human factor. So this aspect is called as critical evaluation. I hope you got my point. I agree? I hope you got my point. Now this particular theory is also criticized on one more ground. सुनना जरा, एक और मैं example देता हूँ आपको. And that particular ground is, the theory was actually criticized by trade unions. Trade unions. I hope you know very well what are trade unions. मजदूर संघ जो होते हैं, अलग-अलग areas में काम करते हैं, अलग-अलग company setup में काम करते हैं. जैसे हमारे एक मजदूर संघ है, इंटक है, एटक है, कई मजदूर संघ हैं. कृषि मजदूर संघ है, रेलवे का अपना एक यूनियन है, railway union hai. Some labor union in our country are supported by, of course, by left, some are by BJP, some are right wing, some are left wing. But these trade unions are working in our country. Now what these trade unions are doing? These trade unions are securing the interest of workers, employees. For this particular purpose, they are demanding for some more remuneration, better work condition, more motivation, etc. उसके लिए हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं कि वर्कर्स को ज़्यादा पैसा दो, उनको ज़्यादा पेंशन, प्रोविडेंट फंड दो, जो भी कुछ है. So they are working basically, they are taking initiative to provide better work condition and to, of course, secure the interest of workers. So number of trade unions are working in our country. At that time, the trade unions of 19th and 20th century, वो evolve ही हो रहे थे. They have criticized this theory. And they have criticized this particular theory on the ground of mental revolution. Mental revolution. समझना, उन्होंने कहा कि अगर मेंटल रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, कोहेसिवनेस, इंटीग्रेशन आ गया, वो सौहार्दपूर्ण हार्मनी की तरह काम करने पड़ेंगे, then it could be the possibility that of course the trade union could become irrelevant. By trade unions are doing the strike, the hartals to protect the interest of workers. So the trade unions have actually criticized the notion, the principle of mental revolution. और mental revolution का मतलब ये था कि we have to change the mental outlook, the thought process of worker and management. Worker ये सोचे कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरे पे ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, और मैनेजमेंट ये सोचे कि मैनेजमेंट अगर वर्कर के साथ कोऑपरेशन में काम कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. But if there is cohesiveness, coordination and harmony between worker and of course between the management, then the trade unions could become irrelevant. So trade unions, which are nothing but an organized setup, they are very much organized. They have criticized the concept of mental revolution. It was one more criticism of, you can say, basically scientific management theory. ठीक है, तो ये तो हो गया criticism, and then we have to evaluate it that whether this particular criticism is correct or not. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे in spite of the fact that trade unions are organizational setup which are protecting the interest of workers. But the criticism of trade unions seems to be much more irrelevant or much more utopian at that time, because the main focus of scientific management theory is to bring
much more coordination between workers and of course what? Management. So the criticism, the argument raised by trade union was based on their own personal interest, based on their own survival, their own sanctity. मतलब ट्रेड यूनियन खुद सरवाइव करना चाहती थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वो ये दर्शाना चाहती थी कि वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनको हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकता. So that criticism has been given with the perspective of trade union. It was not the actual criticism. क्योंकि ट्रेड यूनियन को अपना सर्वाइवल रखना था या फिर अपनी सैंक्टिटी को बचा के रखना था, और उनको ये प्रदर्शित करना था, शो करना था कि वी आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ वर्कर्स, आई मीन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स. That's why the trade unions have criticized the concept of scientific management called as mental revolution. Actually, at that time, this was not the criticism. So what we have done? Here we have analyzed that the criticism at that time was not rational because trade unions also want to protect their own interest, want to show to the people, to the workers that we are the only protector of your interest. मैनेजमेंट आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हम ही करेंगे क्योंकि हम आपके बीच के लोग हैं. अब जैसे आपने देखा होगा कि जब फॉर्म्स बिल इनेक्ट करे गवर्नमेंट ने, द 3 फॉर्म्स लॉज हैड बीन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट. ऑफ कोर्स पार्लियामेंट मतलब मैं गवर्नमेंट ही बोल देता हूं उसको, गवर्नमेंट ने, तो उसके अगेंस्ट कई जगह आंदोलन हुए, कई जगह आंदोलन नहीं हुए. मेनली द मूवमेंट हैड टेकन प्लेस ऑफ कोर्स एट द बॉर्डर ऑफ सिंधु बॉर्डर ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, इन द रीजन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो यहां पर मूवमेंट हुए. बट द सेम टाइप ऑफ मूवमेंट हैड नॉट टेकन प्लेस थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है. अच्छा, गवर्नमेंट ने शो करने की ये कोशिश करी कि वी आर द एक्चुअल प्रोटेक्टर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड वी आर द इंस्टीट्यूशन विच हैव इनेक्टेड 3 फार्म्स लॉ इन फेवर ऑफ फार्मर्स एंड फार्म सेक्टर. और किसानों ने, जो किसानों के जो नेता थे, जो भी कुछ कहो आप, वो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने ये शो करने की कोशिश करी कि नहीं, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स कुड बी प्रोटेक्टेड ऑफ कोर्स ओनली बाय द फार्मर्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट. And the 3 forms laws which are enacted by the parliament are completely derogatory and they are abrogating the interest of farmers. ये फार्मर्स के इंटरेस्ट को, चाहे वो एमएसपी को लेकर है या दूसरे मैटर्स को लेकर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फार्मर्स के इंटरेस्ट को कम कर रही है, उनके प्रोडक्शन को या फिर उनकी इनकम को कम कर रही है, जो भी कुछ आर्गुमेंट उन्होंने दिए थे. ठीक है. तो हर एक यू कैन बेसिकली प्रोविजन का या हर एक क्रिटिसिज्म का एक दूसरा एंगल भी होता है, और ये दूसरा एंगल होता है वो कुछ हद तक हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है. तो व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द क्रिटिसिज्म, द ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म, दैट इवैल्यूएशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल इवैल्यूएशन. एंड बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कवरिंग 3 डायमेंशन. देखो हम लोग 3 डायमेंशन कवर कर लिए. एक तो आपको ये पता चल गया कि क्रिटिसिज्म किस बेस पर किया गया, फिर एनालाइज करने के बाद ये पता चल गया क्रिटिसिज्म उतना सही भी नहीं था, मतलब यहां पर पॉजिटिव पार्ट आ गया. और जब आपको यह पता चल गया कि व्हाट इज अ क्रिटिसिज्म, ठीक है, देन वी कैन प्रोवाइड ऑफ कोर्स सम सजेशन फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और प्रोसेस. हालांकि यहां पर हम सजेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये थ्योरी है. बट बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन वी आर कवरिंग 2 डायमेंशन. वन, द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड सेकंड, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी. Because we are evaluating the grounds of criticism and providing a different positive picture to the examiner. That's called as critical evaluation. मुझे उम्मीद है अब आप समझे कि critical evaluation के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं. ठीक है, मुझे उम्मीद है समझे. कोई क्वेश्चन हो यहां पे तो मुझसे पूछ लो. मैं समझाना चाहता था आपको critical evaluation का मतलब क्या है. So if you have any question, you can ask. I hope you are in position to understand what is critical evaluation. ठीक है. गुड, गॉट इट. चलिए, तो
मैं 3-4 चीजों पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आएगा. सो जस्ट राइट द टाइटल, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द थ्योरी. Critical evaluation of the theory. Critical evaluation of the theory. So initially we have to write the criticism, then we have to evaluate the criticism. Agree? चलो लिखना चालू करो. Critical evaluation of the theory. Continue. Continue. The theory was criticized as a mechanistic theory. The theory was criticized as a mechanistic theory. Theory was criticized as a mechanistic theory. Mechanistic theory of organization. Mechanistic theory of organization. Mechanistic theory of organization, which neglect the human psychological needs, the human psychological needs, which neglect the human psychological needs, human psychological needs, human psychological needs, human psychological needs, and human behavior within the organization. Human psychological needs and human behavior within the organization. Within the organization. So that's a criticism. Change the paragraph. Now we have to evaluate it. Evaluate it. Although the theory has criticized the human angle, although the theory has criticized the human angle, comma, leadership skills, human angle, leadership skills, and variables of motivation, but the evolution of the theory had taken place. But the evolution of the theory has taken place. Evolution of the theory has taken place at the time when 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 the basic need of the society is to bring the basic need of the society is to bring the basic need of the society is to bring more prosperity by production and efficiency. More prosperity by production and efficiency. By production and efficiency. Efficiency. Continue. It was the very first theory. It was the very first theory that has adopted scientific techniques to bring more efficiency in the organization. Scientific techniques to bring more efficiency in the organization. More efficiency in the organization. So I hope so you understand what this critical evaluation ever means. The very first aspect of critical evaluation. Second, this theory was criticized by trade unions on the ground that the interest of management and workers cannot be integrated
management and workers cannot be integrated, cannot be integrated only by taking the perspective of production and efficiency. Continue. According to these production and efficiency, according to these trade unions, the management and managerial activities never understand. Management and managerial activities never understand the aspiration, demands and grievances of the workers. So it was nothing but a ground of criticism. Agree? Now we have to counter it. I mean, we have to analyze it. ठीक है, चंद्र paragraph. Although trade unions are the organizational setup, to protect the interest of workers. Organizational setup, organized trade unions to protect the interests of workers, but protect the interest of workers, but protect the interest of workers, but by criticizing the concept of mental revolution, they try to justify their existence. They have the fear to become irrelevant. And subsequently they have not adopted the mental revolution on the part of management and workers. ठीक है, management and workers. So I hope so you are in a position to understand that in which particular manner we have to criticize the whole concept. तो आज मैंने आपको एक थीम बता दिया कि आपको पढ़ना कैसा है. आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं. होमवर्क ये है कि you are having all the supporting notes. You can get the supporting notes from the descriptive section. ठीक है, here we have demarcated at that, in those notes we have demarcated the grounds of criticism also. And then you have to critically analyze that the ground of criticism are absolutely correct or not. See, listen carefully. No ground of criticism, no criteria of criticism is absolutely correct. वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता. There's always another face of the respective coin. ठीक है, तो जरा कुछ और मैंने 2-3 एरिया आपको बताया क्रिटिकल इवैल्यूएशन के. नाउ इट्स योर होमवर्क to of course write some more text about critical evaluation. You can write 3, 4, 5 points. 2 I have discussed. So now you can write of course 3 more points, 5 points approximately. 5 points का मतलब होता है easily you can write more than 200 words. Agree? So if they are asking the question with regard to critical evaluation, you are in a position to write the answer in a much more appropriated manner. तो मुझे उम्मीद है समझ गए कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है. अब कुछ होमवर्क
एक असाइनमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को, अपने लेवल पे करिए और 3-4 पॉइंट और लिख ली क्रिटिकल इवैल्यूएशन को लेकर, और यहां पर आपका ये कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। जितने बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम लोगों ने कवर कर ली। तो मैं यही काम करूंगा, आफ्टर डीलिंग विद द प्रिंसिपल्स, आफ्टर डीलिंग विद द फीचर्स ऑफ एवरी थ्योरी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द थ्योरी, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग द क्रिटिकल इवैल्यूएशन हम लोग 2 काम कर ले रहे हैं यहाँ पे। देखो बड़ी अच्छी बात है, पहला काम ये कर ले रहे हैं कि हम उस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और दूसरा उसकी रेलेवेंस भी बता रहे हैं, और क्रिटिसिज्म को इवैल्यूएट भी कर रहे हैं। तो 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। तो क्वेश्चन या तो आ सकता है फीचर्स पर, प्रिंसिपल्स पर, क्रिटिसिज्म पर, लिमिटेशंस पर, पॉजिटिव पार्ट पर, या क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर, या दे कैन आस्क सिंपल क्वेश्चन टू डिस्कस द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इन द डिस्कशन पार्ट यू हैव टू राइट बोथ द एंगल्स, आई मीन सम प्रिंसिपल्स इन अ शॉर्ट मैनर, ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ रहे हो कि क्या करना है हम लोगों को एग्जामिनेशन में। ठीक, सो आई होप सो you have enjoyed this particular lecture, and here we have completed our very first theory of administration and organization called as scientific management. I have to cover few more theories also. Okay? Like there is a theory called as classical theory, yesterday I told you. Then we have bureaucratic theory, some more theories. ठीक है, तो हमें और theories भी cover करना है, और उसके लिए आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। थ्योरीज वाला सेक्शन में आपको कवर करवा दूंगा। मेरा मेन एम यह था कि आपको ये समझ में आए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, इसे हमें पढ़ना कैसे है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्केल क्या है, डायमेंशंस क्या है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, और अगर चीज़ किसी को भी पढ़ना है, किसी टॉपिक को भी पढ़ना है, तो उसकी सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि बिना सीक्वेंसिंग के अगर आप पढ़ोगे, रैंडमली उठा के बुक से पढ़ लोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कोहेसिवनेस, जो इसे हम बोलते हैं क्रोनलाइजेशन, वो नहीं ला पाओगे। सो यू हैव टू सिंक्रोनाइज द सब्जेक्ट। एग्री? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, उसको उसी फ्लो में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, सो टुमारो वी विल मीट एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद आवर सेकंड थ्योरी कॉल्ड एज क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। एट लास्ट वी विल डिस्कस द क्रिटिकल इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ सम एस्पेक्ट, एंड देन आई विल गिव सम होमवर्क्स टू यू। तो डेली बेसिस पर आपको होमवर्क दे रहे हैं कि कुछ और पॉइंट्स भी आप लिखिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर। मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी कि हाउ वी हैव टू राइट द आंसर विद रिगार्ड टू क्रिटिकल इवैल्यूएशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप you understand the concept of scientific management. If you are having any suggestions or any observation for better, you can say basically delivery of lecture and whatever the case may be, you are more than welcome. But I hope you are appreciating our gesture to provide these free online lectures to you with regard to the most complicated topic of your syllabus, that is public administration, and mainly in English medium. ठीक है, thank you very much बच्चों, take care, do well, and be safe and be healthy. Thank you. We'll meet tomorrow at the same time. Thank you.